Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next item in Wordsworth's theory of poetry is what is poetry, the definition of poetry and its explanation. The first definition which he gives to us about poetry is he tells us that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Spontaneous means automatic, without any effort. Overflow, when something overflows, it goes beyond the upper level. And powerful feelings refers to the feelings which are not normal. Even if they are that of love, they are very powerful. If they are that of pity, once again powerful. So these emotions are spontaneous and they overflow. And when these powerful feelings overflow, what it becomes is actually poetry. Poetry is the overflow of powerful feelings. That is, we are filled with not only feelings but powerful feelings, and these feelings we are filled so much that they overflow, and this overflow of the powerful feelings is actually poetry. But this is very spontaneous, automatic, without any effort. This word spontaneous also gives us the clue that he means that inspiration is important for poetry. When there is mood on you, you can write it. When you are inspired, you can write it. When you are not inspired, when the mood is not on you, then you cannot write poetry. So, spontaneous overflow of powerful feelings means that we have some feelings which are very powerful, and these feelings fill us. We are filled with these feelings. We are filled so much that they then overflow, and this overflow is poetry. This overflow is automatic, spontaneous, without any effort. So, this is what he says about poetry, is the first definition of poetry, that it is the overflow of powerful feelings. In this case, the spontaneous word refers to the inspiration process, that when the mood is on you, you can write poetry. So the source of poetry actually is the feelings in the heart, and not only the feelings, the ordinary feelings, but the powerful feelings. And these powerful feelings then overflow, and this overflow is spontaneous, automatic. It cannot be done with your own effort. So this is what he means by the word automatic. Therefore, deep emotions, strong emotions, powerful emotions are of basic importance for writing poetry. Now, this inspiration, deep emotion, and passion, this is a departure from the neoclassical poetry, which stressed and reiterated wit and intellectual effort. That is, you can become a good poet with the help of your effort, with the help of your intellectuality. That is, there is no place of inspiration according to the neoclassical एज। तो ये व्हाट इज़ पोएट्री हमारा टॉपिक है और इस लेक्चर का, और ये कंटिन्यूएशन है दरअसल पिछले लेक्चर के साथ। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ पोएट्री जो वर्ड्सवर्थ की है, इसमें 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ व्हाट इज़ अ पोएट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी चीज़ व्हाट इज़ पोएट्री। तो ये व्हाट इज़ पोएट्री का जवाब है कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। आप फीलिंग्स महसूस करते हैं
और ये फीलिंग्स बड़ी मजबूत ताकतवर होती हैं और आप इन फीलिंग्स से भर जाते हैं, इतना भर जाते हैं कि ये ओवरफ्लो करता है। और जब ये ओवरफ्लो करता है तो जो चीज़ ओवरफ्लो हो जाती है ये पोइट्री है, और ये खुद ब खुद होती है, आपकी एफर्ट के साथ नहीं होती, आप चाहें तो नहीं होती। लिहाजा इसके लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, इसके लिए आपकी फीलिंग्स की ज़रूरत है, पोइट की फीलिंग की ज़रूरत है। आपकी फीलिंग्स आपके हार्ट में ये इसका सोर्स होंगी। तो जब तक डीप इमोशंस, डीप पैशंस, स्ट्रांग पैशंस नहीं होंगी तो पोइट्री नहीं लिखी जाएगी। अब ये इमोशंस और पैशंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये न्यू क्लासिकल का आइडिया बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल न्यू क्लासिकल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनका ख़्याल था विट, अक़ल, इंटेलेक्ट और एफर्ट ये ज़रूरी है, और ये कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है, यानी एफर्ट इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल इसका एक अपोजिट आइडिया है। The second definition of poetry by Wordsworth is that poetry is the emotion recollected in tranquility. The words are a little difficult, so I would explain them. Poetry as the emotion. You already know the emotion. The meaning of emotion is passion. Recollected means thinking about it. So you think about the emotion you have felt, you recollect it in tranquility. When you are sitting very calmly in your bed, then you are reminded of that emotion you had felt previously and you think about it. Why does he give us this second definition? It is so because the first definition, which he says is the spontaneous overflow of powerful feelings, may be misunderstood because people can think that it is a kind of uncontrolled and chaotic outpouring of emotions, that the emotions are expressed chaotically in uncontrolled manner because it is spontaneous overflow. Therefore, he tells us that it is also the emotion about which someone, the poet, has thought deeply. This is the emotion which he has recollected, thought about in tranquility when he was sitting in his bed very calmly and thinking about the emotion he had felt uh, sometime or somewhere. So these two might look contradictory, that it is the spontaneous overflow of powerful feelings, then it could be a chaotic outer pouring, but it isn't. He says no, the poet is the person who has thought long and deeply about his subject matter, and there is the role of thought in poetry. It is, he says, spontaneous, and when you say it's spontaneous and then you say that there is thought involved, it might look contradictory. But he tells us that there is the role of thought. It isn't the chaotic outer pouring, it isn't the uncontrolled outer pouring. ये दूसरी डेफिनेशन है कि पोइट्री जो है ये वो जज्बा है जिसको आप याद करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं जब आप आराम से बैठे हुए हों, तो आप इस पे सोचते हैं। जो जज्बा आपने महसूस किया है आप उसको सोचते हैं, उस पे सोच विचार करते हैं। अब ये दोनों ये दूसरी डेफिनेशन इसलिए दी कि जब आप कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है तो उसका मतलब ये गलत लिया जा सकता है कि ये अनकंट्रोल्ड और chaotic है। chaotic का मतलब है कि अचानक एकदम बगैर किसी सोच के हला गुला वाला। आउटर पोरिंग का मतलब है निकालना, आप इमोशंस निकाल रहे हैं और ये अनकंट्रोल्ड है। तो ऐसा नहीं है, कहता है नहीं, इस पे राइटर सोच चुका होता है और इसको रिकलेक्ट किया होता है जब वो सुकून की हालत में था। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, लगता है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि
शायर इस पे बहुत लॉन्ग और डीपली सोच चुका होता है जब वो ट्रंक्विलिटी की हालत में होता है। तो रोल ऑफ थॉट पोइट्री में मौजूद है। ये नहीं है कि बस अचानक ही ये निकले और शुरू हो जाए। There are 5 stages of the poetic process, that is about the successful composition. There are 5 stages through which this composition has to pass. The first stage is that of observation. The second is recollection. The third is contemplation. The fourth is the renewal of the original emotion. And the fifth is the composition. So we will discuss them one by one. The first one is observation. In order to write a poem, first of all, you need to have the sense of observation. For example, you observe something, an object uh, in real life. You may observe a character or a situation. For example, you might have a look at the beautiful daffodils, or a beggar, or a mad woman holding her baby. Wordsworth has written about daffodils, a beggar, and also a mad woman holding her baby. So it may be a character or situation. And when you have a look at these things or the situation, it sets up powerful emotions in you. That is, you become emotional. There are many emotions, and these emotions are aroused with the help of this observation. For example, when you have a look at the daffodils, Wordsworth has written a beautiful poem about the daffodils, and you see them, observe them dancing in the breeze, and this makes you happy as a poet. You become very happy, and this emotion is aroused in you when you have a look at the beggar or a mad woman holding her baby. Again, powerful emotions are aroused, but this time these powerful emotions are the feelings of pity for these two people. So, observation then leads to the arousal of emotions. Of course, the reaction of the poet is not immediate to these impressions. When these emotions are aroused, the poet doesn't suddenly react to all these. He allows these emotions to sink into his mind so that he could later on recollect them, which is the next stage. ये 5 stages से आपकी क्रिएशन, पोएटिक क्रिएशन या पोएटिक प्रोसेस गुजरता है। पहले को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसको आप मुशाहिदा कह सकते हैं। दूसरे को रिकलेक्शन कहते हैं, जिसका मतलब है चीज़ को याद करना, दोहराना अपने जहन में। नेक्स्ट कंटेम्पलेशन है, उस पर सोचना। और इसके बाद रिन्यूअल ओरिजिनल इमोशन है, जो पहली मर्तबा जज्बा उभरा था उसका रिन्यूअल होना। और इसके बाद आखिरी कंपोजिशन है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि आप कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या किरदार या सिचुएशन देखते हैं। मसलन आप ऑब्जेक्ट देखते हैं डैफोडिल, किरदार देते हैं बेगर, वुमन होल्डिंग हर बेबी इन हर हैंड, सिचुएशन है। तो इससे आप में पावरफुल इमोशंस पैदा होंगी। डैफोडिल्स को देखकर आप में खुशी की इमोशन पैदा होगी। बेगर और मैड वुमन होल्डिंग हर बेबी इन हर हैंड्स, ये अराउज करेगी पावरफुल फीलिंग ऑफ पिटी की, रहम की इमोशंस अराउज करेगी। तो आप एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे कि एकदम लिख लेंगे, आप इस इमोशंस को पे सोचेंगे, इसको अपने अंदर डूबने देंगे और सोच विचार के बाद ही इस पे कुछ काम आप करेंगे। अचानक इस पे आप काम नहीं करेंगे। तो ये पहला स्टेज होगा पोएटिक क्रिएशन का, जिसको ऑब्जर्वेशन का नाम उसने दिया है। The second stage in the process of poetic creation is recollection. Uh, in this stage, the poet is reminded of the incident or the observation he has already done.
He thinks about that feeling or feelings which had been aroused in the first place when he had looked at the object or at the situation or at a character. And now he is sitting in the state of tranquility and he's thinking about that emotion which was aroused for the first time when he looked at them. For example, in the poem The Daffodils, Wordsworth tells us that he was sitting in his comfortable couch and he saw those daffodils once again with the help of his mind eye. And this is that stage of recollection. दूसरा मरहला पोएटिक क्रिएशन में रिकलेक्शन का है, जिसका मतलब है याद करना। तो पहले स्टेज में जो कि ऑब्जर्वेशन था, जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया एज ए पोएट, आप आराम से ट्रैंक्विलिटी में बैठकर उस पे दोबारा सोचते हैं, उसको याद करते हैं कि वो फीलिंग्स कैसी थी और उस पे सोच विचार करते हैं। इस वक्त आप ट्रैंक्विलिटी की हालत में होते हैं, चीज़ आपके सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके सामने होती है विद द हेल्प ऑफ माइंड आई, जहन की आंख से वो आपको नज़र आती है, अगरचे इस वक्त वो इन रियलिटी आपके सामने मौजूद नहीं है। तो ये दूसरा स्टेज होगा पोएटिक क्रिएशन का, रिकलेक्शन। पहला स्टेज था ऑब्जर्वेशन, तो दूसरा स्टेज था रिकलेक्शन। The third stage in the production of a poem is that of contemplation. This is the stage when the poet deeply thinks about his experience, the things or the situation or the character he had observed. He thinks about them very deeply and not for a short time but for a very long time. He thinks about it over and over again, and as he thinks about these incidents, all the things which are accidental and temporary are removed. So those things which are not essential are removed. Only the ideal is left. Only the essential truth is left. This process of deep thinking actually removes the superfluous material, the extra material, and only the most important, the essential, the truth, and the ideal is left behind. And memory in this case plays an important role because it is with the help of the memory that he contemplates about all those things. So, memory plays an important part in it, and as a result, this emotion is transformed into the universal, because all the superfluous things are removed, all the unimportant things are removed, the temporary, and only the ideal and the permanent are left behind. तीसरा जो स्टेज है वो मुराक़बे का है। कंtemplation को अरबिक में मुराक़बा कहते हैं। डीप थिंकिंग, गहरी सोच किसी चीज़ के बारे में करना। तो इस स्टेज में शायर लंबा सोचता है, उस इंसिडेंट के बारे में बार बार सोचता है, और इस दौरान जो चीज़ें टेम्परेरी हैं और एक्सीडेंटल हैं, आर्जी हैं, उसको रिमूव करता है, और जो चीज़ें परमानेंट हैं, मसलन पैशन ऑफ लव परमानेंट है, पैशन ऑफ पिटी परमानेंट है और आइडियल है, ये आइडियल और इसेंशियल ट्रूथ रह जाता है और बाकी चीज़ों से ये पाक हो जाता है, फर्ज हो जाता है सुपरफ्लुअस मटेरियल से। तब इस काम में मेमोरी या यादाश्त बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये मेमोरी ही के थ्रू ये सारी चीज़ दोबारा याद आती है, और ये जो इमोशन है ये लोकल से यूनिवर्सल में चेंज कर दिया जाता है। तो ये तीसरा स्टेज हुआ। पहला स्टेज हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन का, दूसरा स्टेज रिकलेक्शन का, और तीसरा स्टेज कंटेम्पलेशन का, और नेक्स्ट जो स्टेज है वो है रिन्यूअल ऑफ द ओरिजिनल इमोशन का। The fourth stage
in the process of writing and production of poetry is the renewal of the original emotion. It means that when you contemplate on what you have seen for a long time, then after that contemplation, the emotion which you or the poet had felt for the first time is renewed. That is, the a similar, more or less similar type of emotion is aroused once again. Now he is in tranquility, he's sitting in his bed, but even then emotions are aroused once again. Now this time the emotions are similar. They are not exactly the same, they are similar. So Wordsworth is careful in using his words. He says the emotion, an emotion kindred. Kindred means similar or like to that which was before the contemplation. So that emotion which he had felt when he had observed the thing for the first time, such an emotion like that, not exactly, but more or less like that, is aroused once again in him. And this emotion now is the one from which the accidental things have been removed, the non essential thing have been removed, and the poet now is in the form of an ecstasy, full enjoyment, so that emotion is renewed. ये चौथा स्टेज है पोइट्री प्रोडक्शन में कि जो इमोशन इसने पहली मर्तबा महसूस किया था कंtemplation के बाद, ये ओरिजिनल इमोशन की तरह ये एक मर्तबा फिर अराउज होता है और इस मर्तबा ये जहन में सोचने की वजह से, कंtemplation की वजह से अराउज होता है। वर्ड्सवर्थ जो अल्फाज करता है, इस्तेमाल करते हुए एन इमोशन किंड्रेड टू दैट, जिसका मतलब है एन इमोशन सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल उस तरह नहीं, लेकिन सिमिलर टू दैट विच वाज बिफोर द कंटेम्पलेशन, यानी पहली मर्तबा जब उसने चीज़ देखी थी उसकी तरह, न कि एग्जैक्टली उस तरह, लेकिन उससे मिलती जुलती इमोशन ये रिफ्रेश होती हैं और ये अराउज होती है एक मर्तबा फिर। तो ये चौथा स्टेज था। अगर हम रिपीट करें तो पहला स्टेज ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिकलेक्शन, तीसरा कंटेम्पलेशन और चौथा रिन्यूअल ऑफ द ओरिजिनल इमोशन, जबकि पांचवा और आखिरी जो है वो कंपोजिशन का स्टेज है। The final stage in the production of poetry or a poem is its composition. The writer now has observed the thing, he has recollected it, he has contemplated on it, he has thought about it deeply, and the emotions now is aroused once again. At this moment, at the moment of composition, the original impression is revived and it is recalled, and this is the moment that the poet is not in tranquility, because that emotional excitement is there and tranquility is now replaced by the emotional excitement. And in this case, the consciousness, the willpower, has little part to play at the occasion of this creation. The poet abandons himself to the aroused passion and he gives himself, he permits the passions to have full control of him, and therefore Wordsworth uses the word spontaneous. It is spontaneous because now he has allowed himself to be taken away by the emotions. So therefore he tells that it is spontaneous. Composition आखिरी स्टेज है
اور اس میں اس نے چیز لکھنی ہے. اس کی سوچ بچار کے بعد اب یہ ایموشنل ایکسائٹمنٹ اس میں آ گئی ہے جو پہلی مرتبہ اس میں آئی تھی، اب وہ آ گئی، ٹرانکولیٹی ختم ہو گئی ہے ایٹ دا ٹائم آف کریشن. اور اب ٹرانکولیٹی کی جگہ پہ ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہے، جذباتی جوش و خروش ہے. اور اس جذباتی جوش و خروش کے اندر وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے ایموشنس کو، اور یہ پروسیس آخر میں ایٹومیٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اپنے فیشن کے، لہٰذا ورڈسورتھ لفظ اسپونٹینیس استعمال کرتا ہے اس کمپوزیشن کے لیے. تو ایک مرتبہ پھر اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں مختصر طور پہ تو ہم اصل میں پڑھ رہے ہیں ورڈسورتھ تھیوری آف پوئٹری. ورڈسورتھ تھیوری آف پوئٹری میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پوئٹ کیا ہے، واٹ از اے پوئٹ. دوسرا بھی جو ہم نے ختم کیا وہ یہ ہے کہ واٹ از پوئٹری. دو تعریفیں ہم نے پڑھی کہ پوئٹری اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس، اور دوسرے ہم نے پڑھی پوئٹری ایز دی ایموشن ریکلیکٹڈ ان ٹرینکولیٹی. پھر ہم نے پوئٹک پروسیس کے 5 سٹیجز پڑھی: آبزرویشن، ریکلیکشن، کنٹمپلیشن، اور اس کے بعد رینیول آف دی اوریجنل ایموشن اور کمپوزیشن، یہ فائنل تھا. تو یہ دوسرا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے تھیوری آف پوئٹری ورڈسورتھ کا. This much is enough for the time being. Thank you and good luck.